अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंटिन्यू है डोमेन 3 CISSP का। डोमेन 3 क्या है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। और इसका जो है आज हम पार्ट 10 में रिकॉर्ड करूँगी और पार्ट 9 को मैंने जो है ना पॉइंट नंबर 75 के ऊपर स्टॉप किया था। और अब आज हम पॉइंट नंबर 76 से शुरू करेंगे पार्ट 10। और प्लीज़ अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा, अदरवाइज़ आपको कोई बात भी समझ में नहीं आएगी ना। और फिर से एक बात रिमाइंडर है मेरी तरफ से कि है ना, प्लीज़ जितने भी एक्रोनिम्स और एब्रिविएशंस हैं उनको जो है डोमेन के हिसाब से उसके फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उनको मेमोराइज कर लीजिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ामिनेशन में ना। तो चलें पॉइंट नंबर 76 को शुरू करते हैं और उसका नाम है वर्चुअलाइज सिस्टम्स ना। Virtualization technology is used to host one or more operating system within the memory of a single host computer or to run applications that are not compatible with the host operating system ना। विजुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो है ना एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को होस्ट करती है एक ही कंप्यूटर से। ठीक है, एक ही कंप्यूटर से होता है। द हाइपरवाइजर ऑल्सो नोन एज द वर्चुअल मशीन। फिर है मॉनिटर स्लैश मैनेजर, VMM is a component of virtualization that creates, manages and operates the virtual machine ना। मॉनिटर स्लैश मैनेजर दोनों जो होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं वर्चुअलाइजेशन, और वो जो है मैनेज और ऑपरेट करते हैं वर्चुअल मशीन को ना। इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप ये है कि अ टाइप 1 हाइपरवाइज़र इज़ अ नेटिव और बेयर मेटल हाइपरवाइज़र, यानी कि नेटिव है, ओरिजिनल है। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन देयर इज़ नो होस्ट operating system. Instead, the hypervisor installs directly into the hardware where the host operating system would normally reside ना। हार्डवेयर सिस्टम में उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये नेटिव होता है, ये ओरिजिनल होता है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, अ टाइप 2 हाइपरवाइजर इज़ अ होस्टेड हाइपरवाइजर, जो कि होस्ट करता है। In this configuration, a standard regular operating system is present on the hardware, and then hypervisor install as another software application ना, जिसमें है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हार्डवेयर के अंदर, लेकिन ये हाइपरवाइजर जो टाइप 2 है इसको इंस्टॉल किया जाता है एज अ सॉफ्टवेयर। पहला जो होता है वो जो टाइप 1 जो था वो नेटिव था, यानी कि उसके लिए उसके पास होस्ट नहीं होता था ऑपरेटिंग सिस्टम का ना। ठीक है ना, लेकिन है ना टाइप 2 के अंदर है ना ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में मौजूद है, लेकिन इसके बाद इसे एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। Virtualization can also provide a reasonably secure means to continue to operate end of life and end of service life, end of support operating system to support legacy business application। हमने ये पढ़ा था ना कि एंड ऑफ लाइफ, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जब एंड ऑफ लाइफ हो जाती है तो फिर वो मैन्युफैक्चर उसे दोबारा नहीं बनाते हैं। फिर एंड ऑफ सर्विस लाइफ, वो कुछ अरसे तक उसकी सर्विस देते हैं, फिर एंड ऑफ सर्विस भी, सपोर्ट एंड सर्विस दोनों हो जाता है ना। तो ये जो है ना विजुअलाइजेशन जो है वो रीजनेबली सिक्योर मीन्स होता है कंटिन्यू करने का ना, अगर कोई चीज़ की एंड ऑफ लाइफ हो जाती है तो।
अच्छा, पॉइंट नंबर 77 आता है वर्चुअल सॉफ्टवेयर. Or virtual application is a software product deployed in such a way that it is fooled into believing it is interacting with a full host operating system. ना मैं इसको नीचे ज़रा सही से एक्सप्लेन कर दूंगी. A virtual application is isolation from the host operating system so that it cannot make any direct or permanent changes to the host operating system. This allows the contained software to perceive it has interaction with the operating system without that interaction actually taking place. ना अच्छा, अब इसको सिंपल टर्म में हम यूँ समझ सकते हैं कि इन सिंपल टर्म्स इट्स अलाउ यू टू रन टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग ओनली वन पीसी. इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन सिंपल इसके अंदर ये समझना है कि टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक पर्सन पीसी से चल सकता है. वन इज़ फिजिकल एंड अदर आर वर्चुअल. ना ठीक है ना. तो ये इसका सिंपल वर्चुअल सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है, जिसे किताब ने थोड़ा सा अल्फाज इधर उधर करके कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन इसको आप बहुत सिंपल तरीके से जान लें कि वो रन करता है टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम को विथ वन कंप्यूटर. ना अच्छा, फिर 78 पॉइंट नंबर 78 है वर्चुअलाइज नेटवर्किंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हैज़ गिवन राइज टू अनदर वर्चुअलाइजेशन टॉपिक्स. ना ये फिर अब बढ़ता गया, दूसरी चीज़ें आती चली गई क्योंकि ये पॉपुलर हुआ, सच एज वर्चुअलाइज नेटवर्क. ना अब वर्चुअलाइज नेटवर्क बन गया. A virtualized network is the combination of hardware and software networking components into a single software-based entity. ना यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नेटवर्किंग है, सिंगल सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर. वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क हैव बिकम अ पॉपुलर मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट बाय कॉरपोरेशन वर्ल्ड वाइड. ना अब बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, बहुत सारी कॉरपोरेशन में बहुत फेमस और पॉपुलर हो गया है. दे अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट और अडेप्ट अदर इंटरेस्टिंग नेटवर्क सोल्यूशन इंक्लूडिंग SDNs जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिक्योरिटी है, वर्चुअल SANs स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पोर्ट आइसोलेशन. अच्छा, अब मैं ये मुझे नहीं पता था कि ये SDN क्या होता है, तो इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है. अ मॉडल इन विच इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. हम जगह जगह थ्रू आउट यही पढ़ते जा रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको ही सबसे ज़्यादा सिक्योर करना ज़रूरी होता है. ना और फिर दूसरा भी जो है ना, ये SAN जो है ना, ये भी मुझे नहीं पता था कि वर्चुअल SAN क्या है. ना तो इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिख दी है. अ लॉजिकल पार्टीशन इन अ फिज़िकल स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी पार्टीशन होती है फिज़िकल स्टोरेज एरिया नेटवर्क में. ना अच्छा, अब आता है पॉइंट नंबर 79 सॉफ्टवेयर डिफाइन एवरीथिंग. ना SDX refers to a trend of replacing hardware with software using virtualization. हार्डवेयर को रिप्लेस किया जाता है सॉफ्टवेयर से. ना वर्चुअल डेस्कटॉप infrastructure VDI is a means to reduce the security risk. It can refer to at least 3 different type of technologies. Now, okay, a remote access tool that grants the user access to a distinct computer system by allowing remote viewing and control of the distinct desktop display, keyboard, mouse and so on.
بہت پریٹی مچ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، کیونکہ ہم خود ریموٹ کنٹرول یوز کرتے ہیں ٹی وی کا، تو پھر ہم اس ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ ریموٹ ایکسیس ہے پہلا پوائنٹ اس کا نا۔ دوسرا پوائنٹ ہے این ایکسٹینشن آف ورچوئل ایپلیکیشن کانسیپٹ انکیپسولیٹنگ، یعنی انکیپسولیٹنگ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسپریسنگ دا اسینشیل فیچر آف سم تھنگ، یعنی کسی کی کوئی خاص چیز کو جو ہے ایکسپریس کرنا، یا پھر جیسے کیپسول بھری جاتی ہے نا، کیپسول کے اندر دوائیوں کو ڈال دیا جاتا ہے، ان کے پاؤڈرز کو ڈال دیا جاتا ہے نا، تو ملٹیپل ایپلیکیشن ان سم فارم آف ڈیسک ٹاپ اور شیل فار پورٹیبلٹی اکراس آپریٹنگ سسٹم نا، یعنی اس کے اندر یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کا ورچوئل ایپلیکیشن کانسیپٹ کا نا، جس سے جیسے کیپسول کی طرح اس میں ساری چیزیں بھر دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے این ایکسٹینڈیڈ اور ایکسپینڈیڈ ڈیسک ٹاپ لارجر دین دا ڈسپلے بینگ یوز الاؤڈ دا یوزر ٹو امپلوائے ملٹیپل ایپلیکیشن لے آؤٹس سوئچنگ بٹوین دیم یوزنگ کی اسٹروکس اور ماؤس موومنٹ نا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ہے ایکسٹینڈیڈ اور ایکسپینڈیڈ ہے، یعنی اور ایکسٹینڈ کرو اس کو، اس میں اور چیزیں ڈالو۔ کیسے ڈالو؟ اس طرح سے ڈالو کہ سوئچنگ بٹوین یوزنگ کی اسٹروکس یوز کرو، یا ماؤس موومنٹ شروع کرو، یا اس کو یوز کرو نا، تو ملٹیپل ایپلیکیشن کے لیے ہے یہ ایکسٹینڈیڈ اور ایکسپینڈیڈ، مور اینڈ مور۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 80، اینی تھنگ اور ایوری تھنگ ایز اے سروس نا، XaaS کا مطلب ہے اینی تھنگ اور ایوری تھنگ ایز اے سروس is the catch-all term to refer to any type of computing service or capabilities that can be provided by customers through or over a cloud solution نا، یعنی ہر قسم کی کمپیوٹنگ سروس یا کسی بھی پروگرام کی کیپیبلٹی ہے نا، پرووائڈڈ ہوتی ہے کسٹمرز کو اوور اے کلاؤڈ سولوشن کے تھرو۔ 1 hour of growth in everything as a service which is XaaS is a security as a service، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا بھی ایبریویشن انہوں نے دیا ہوا ہے، where various forms of security service are being offered through cloud solution۔ various security service آفر ہوتی ہیں تھرو کلاؤڈس کے نا، انکلوڈنگ بیک اپ، آتھینٹیکیشن، آتھورائزیشن، آڈیٹنگ، اینٹی میلویئر، اسٹوریج نا۔ اور پھر انہوں نے یہ سارے SIEMENS دیا ہے، IDS/IPS انالیسز اینڈ مانیٹرنگ ایز اے سروس۔ مانیٹرنگ ایز اے سروس کیا ہے؟ MAAS۔ اچھا، یہ جو ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ SIEMENS کیا ہے، تو میں نے اس کا ڈیفینیشن لکھ دیا ہے۔ اس کا ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ این ایکسٹینسو پورٹ فولیو آف ریلائبل ایکسیس کنٹرول سسٹم نا، یہ ایکسٹینسو ہے یعنی اور بہت کچھ اس میں آتا ہے، آف اے ریلائبل ایکسیس کنٹرول سسٹم ہے، جیسے ویڈیو مانیٹرنگ ہوتی ہے نا، اس کی اگزامپل ہے ویڈیو مانیٹرنگ۔ میں جو ہے یہ پارٹ نمبر 10 کو جو ہے پوائنٹ نمبر 80 پر فنش کرتی ہوں، اور میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ بہت شکریہ سننے کا۔ السلام علیکم۔